आखिरकार दोस्तों दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले आप इसकी लॉन्चिंग वीडियो को देखें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। And we have engine start. And liftoff. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectoire nominale. Vehicle performance is nominal. The Ariane 5 rocket continues to fly uphill in nominal fashion. The rumble of the powerful Ariane 5 now being felt here in the control center. 3D animation. इसे आर्यन 5 रॉकेट के जरिए सुबह के 7:21 पर लॉन्च किया गया है। 13 kilometers in altitude, 7 kilometers downrange. इसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले 2 रॉकेट्स रिलीज होंगे, उसके बाद आर्यन 5 रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में ये टेलीस्कोप है, उसके पार्ट्स रिलीज होंगे और लॉन्चिंग के 21 मिनट बाद आर्यन 5 रॉकेट रिलीज होगा। You can see at the bottom of your screen the yellow line is the trajectory plot, perfectly overlaid over the green line, which was the pre-launch trajectory. 1 minute 41 seconds into the flight, about 40 seconds away from shutdown of the solid rocket boosters. Detects this threshold, it will separate. Séparation des EAP. Done. We have confirmation of solid rocket booster separation from Jean-Luc Voyer. ये अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। ये कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। We have about 1 minute 5 seconds to go before fairing jettison. That'll be the next critical milestone. Nominal, as we say, when attitude and trajectory of the Ariane 5 is going perfectly well. As you can see also on the yellow line on the screen, we had the confirmation of the separation of the 2 solid boosters. And And data of this animation, it means they are expected to receive the data, and it was confirmed right now by the launch operations manager. Acquisition de télémesures par la station de Natal au Brésil. And just confirming now that telemetry is being processed through the Brazilian tracking station. The telescope is also processing telemetry through the tracking and data relay satellite system. As it moves further and further out into deep space, all of the telescope's telemetry and its imagery ultimately will be processed through the Deep Space Network in Goldstone, California. और ये देखिए आर्यन 5 रॉकेट रिलीज हो चुका है। अब इसका छोटा रॉकेट इसे स्पेस में लेकर जाएगा। ये 3D एनिमेशन वीडियो है जो असल रॉकेट के साथ साथ चलेगी। And Raphael Chevrier down in the fishbowl. So far, so good. yes, Rob, we have the confirmation of the separation of the main stage and the ignition of the upper stage. The trajectory is perfectly nominal. This is very important moment for us because it's always a challenge to switch on a cryogenic engine in space condition, and we are now at 220 kilometers of altitude. Speed is a bit more than 7 kilometers per second. As we enter now the second stage of the second phase of the flight, the upper stage is going to power for about 16 minutes to place Webb on its transfer orbit, and right now everything is again nominal as the DDO just said.
स्पेस में जाकर सबसे पहले इसके सोलर पैनल रिलीज किए जाएंगे और फिर इसकी सनशीट को ओपन किया जाएगा ताकि ये सूरज की रोशनी से बच सके। A maneuver to keep Webb's optics protected from overheating, Luce. Exactly, Rob. Like a baby in a cradle. You can see here Webb attached on top of Ariane 5 upper stage with a very specific configuration. Of course, it will dim in Europe, in the US, on the thermal conditioning inside the telescope, and the way the rays of the sun would propagate and interact with sensitive equipment inside the telescope. Maintain this thermal conditioning is really key before separating these और ठीक एक मंथ के बाद ये अपनी मंजिल लैग्रेंची 2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है और इसे अच्छी तरह से एक्टिव होने में कम से कम 6 मंथ लगेंगे और 6 मंथ के बाद ये अपनी पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा। You can see this animation, you can see that the upper stage is going 30 degrees on one side, then 30 degrees on the other side, going back and forth this way to maintain this perfect thermal conditioning for the telescope. It's worthwhile noting that after Webb separates from the upper stage of the Ariane 5 rocket, which और ये 5 सालों तक एक्टिव रहेगा। इसका मेन मकसद 2 सवालों के बारे में जानना है कि हमारी कायनात कैसे बनी और क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। साइंसदानों का दावा है कि अगर हमारी कायनात में कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद है तो ये टेलीस्कोप उन्हें ढूंढ निकालेगा। तो दोस्तों, ये थी लॉन्चिंग वीडियो। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं। एक और वीडियो में डिटेल मुकम्मल वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।